Yes, we have intensifiers, prepositions, and the others, capitalization, presentation, and these topics. Apart from this one, we have some of the tenses as well. So, what I was just thinking that we should start today with our new topic, and that's what prepositions in English. Okay, prepositions are one of the most important topic that we are going to discuss in this class, and the other things that we are going to just conclude as soon as possible later on as well. Okay, so as you can see here, mm, yes, good. Let's go for the next one. That's what prepositions in English. Okay, a new topic I'm going to start here today in this batch. That's what preposition. All of you, I believe that all of you are watching the recordings every day, and if you have any questions, please you may ask me. Okay, the recording link I have shared with all of you. If you have any questions, any doubts regarding that as well, you can ask me anytime. All right, but please don't skip the recording and don't be absent even for a single day, because see, as you can see here, we don't have that much time with us to conclude the chapters of our English. All right, I want you people to do every day practice at home, because until unless you're going to practice, you won't get success over here, because just attending our lectures every day will not make you to learn English. Getting it? You people will have to work hard for this one, to study a lot. Getting it? Just coming for classes and learning English doesn't mean. All right? So what today I'm going to start today is one of the most important topic over here. Just if you're coming classes and thinking that you'll be learning English, it will not make sense. You'll have to practice at home. बोल ले थोड़ा बहुत लगाओ You डांस के have बाद to every day you have to practice at home, and if you don't practice, then may God help you. Remember, then you don't have any sort of choices over there to regret. All right, we're going to go ahead. Yes, and today I'll be giving you, before going, I'll be giving you some of the examples for homework and all. Then we're going to go ahead for the next one as well. So today the first topic that I'm going to start here is what prepositions in English. Okay, here we go. Now, what do you mean by preposition in English? It is really very easy. What do you mean by preposition? First of all, can you please tell me preposition किसको बोलते हैं? position of the verb Not exactly verb. It is showing location, Yes, but of what? place Place of like what? like Position of on noun. table. Correct, exactly. Position of a noun. Simple. noun. If you see there, preposition मैं आप लोगों को एकदम उसको डिटेल में समझा देता हूँ, so that you can understand it well, that how to use this word exactly. Now, if you see there, what is exactly preposition means what? First of all, pre. What do you mean by pre? Pre means before. Before. Pre मतलब यानी पहले, किसी भी चीज के पहले. Next one, just a minute, I'm really sorry.
Sorry. So as you can see here, pre means what? Before. Okay. कभी भी pre का मतलब होता है पहले, कोई भी चीज के पहले होता है, that's what pre. As you can see here, हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड कार्ड. Yes or no? पहले क्या करते हैं हम लोग? पहले भरते हैं उसके अंदर पैसा, फिर हम लोग उसको यूज करते हैं. That's what प्रीपेड कार्ड. पोस्टपेड मतलब यानी बाद में पैसा भरते हैं, पहले उसको यूज करते हैं. सेम केस प्री स्कूल मतलब यानी स्कूल के पहले क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल क्रैश, बालवाड़ी वगैरह जो होता है ना बच्चे लोगों का. सो दैट्स व्हाट वी कैन से दैट प्री स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल. सो प्री मतलब यानी पहले. Okay, I'm just means making you to understand the word exactly preposition. Are you getting the point? Now position means what? The place. Okay, so literally I have postmortem the word over here. So position means what? Place. Now as you can see here, preposition is what? Preposition is a word which we are just placing before a noun. That's called preposition. Before a noun. That's what, for example, a word which is showing the position of the actual noun. That's called preposition. That's called preposition. So what is a preposition? A preposition is a word which shows exactly the position of a noun. Simple it is. Is that clear to all of you? समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. बहुत ही simple सा logic है behind it. Okay, so a word which is showing the position of a noun is called preposition. All right, now in English, as you can see here, we have more than 130 prepositions which even teachers don't know. Point number one, 130 से ज्यादा prepositions है हमारे पास में. स्कूल में खाली 5 से 10 पढ़ते हैं अपन. The remaining prepositions even teachers don't know. Literally, this is what literally the challenge from my side. मालूम ही नहीं बेचारे टीचर्स लोगों को. उनका भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है कि उन लोगों को बताते ही नहीं हो. आई गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट वन. Now before wasting your time, before wasting my time, I'm going to go ahead. Now prepositions, we have multiple prepositions in English, but the main preposition we have in English, those are what? 3. तो हमारे पास में 3 preposition जो कि सबसे ज्यादा मेन है वो, that's what? In, on and at. बुक के अंदर क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, but before that I'm going to show you here the basic meaning of these prepositions over here. When do we use in, when do we use on, when do we use at, कब यूज करते हैं हम लोग? Now first of all, in, on and at, ये 3 prepositions ऐसे हैं इंग्लिश के अंदर जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं. सबसे ज्यादा every sentence we are making, we are containing over there in, on and at, in, on and at. Yes or no? Now the simplest meaning is there. If you see 130 plus prepositions we have in English, just imagine कैसा कचरा होता रहेगा preposition का English में. Simple thing is what? In, on and at. These are the basic prepositions we have in English. Point number one. As you can see, when do we use in? हम लोग in कब use करते हैं English में? Can you please tell me? Inside, Inside. big, Big, exactly. Is as you can see here, we are going to use here in for 2 things. When something is inside and when something is big. जब कोई चीज अंदर रहेगी, जब कोई चीज बड़ी रहेगी, we are going to use there inside, and for big we are going to use there in. Simple. क्यों, क्या, कब, कैसे? I'm just going to show you ahead. When do we use on? specific period of time, Specific period of time. When do we use on? surface, Correct. We are going to use it on for surface. ध्यान दीजिए please all of you. We are going to use on for surface. कोई चीज का surface रहेगा वहां पर हम लोग use करेंगे उसके लिए on. And when do we use at? exact time, Any specific time. Exact time. Okay, we are going to use here exactly for exact time and exact position, we can say. Okay, not only time but for the position. Now we have 3 basic prepositions over here in front of you, and we are going to use point number 1, in, for when something is big and when something is inside. We are going to use on for surface. Okay, and we are going to use here at for exact time and exact position. These are the 3 prepositions that we are using the most in English. Most of the time, if you see in every means in every sentence, we are going to use these prepositions at the most. Now when to use, when not to use, and how to use, I'm just going to show you here. Just let me show.
Wait a minute. I hope you're able to see me in the screen. Means in the camera, sorry. Yeah, here we go. Now when something is inside and when something is big, we're going to use their in. Okay? Simple. For example, अब जैसे कि मैं बोल सकता हूँ ये जो फोन है ये मेरे पॉकेट में आई कैन से द फोन इज इन माई पॉकेट सो द फोन is in my pocket when something is inside. Next one, I'm in my bedroom. I'm in my bedroom. I'm inside the bedroom. Getting it? So when something is inside, we're going to use their in. For example, I have a lot of data in my laptop. In my laptop. Next one, I have many books in my satchel. Now this is my satchel. ये बैग नहीं है, ये satchel है. बैग हमारा कौन सा रहता है? ट्रैवलर बैग होता है ना, उसको बैग बोलते हैं. दिस इज द सैचल. सो अब वो सैचल में मेरे पास में बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव मेनी बुक्स इन माय सैचल. मेरे बैग के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं. बैग, सैचल. ओके, इनसाइड. नेक्स्ट, आई हैव टू नोट्स इन माय पॉकेट्स. सो मेरे पॉकेट में अंदर है. सो व्हेन समथिंग इज इनसाइड, वी आर गोइंग टू यूज इट इन. ओके. सेकंड थिंग, व्हेन समथिंग इज बिग, वी आर गोइंग टू यूज इट इन. लोगों को ये सबसे लोकल डेफिनेशन है. ये चीज आपको जनरली बुक्स में भी मिलेगा नहीं, बट मैं आपको लिटरली बुक से पढ़ाने वाला हूँ, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड की. कुछ भी फेंका पाकी कुछ भी नहीं है. सेकंड थिंग इज व्हाट, व्हेन समथिंग इज बिग, जब कोई चीज बड़ी होती है, वी आर गोइंग टू यूज दैट इन. फॉर एग्जांपल, आई लिव इन पुणे. पुणे इज बिग प्लेस. यस और नो? जब कोई चीज बड़ी रहेगी वहां पर भी हम लोग यूज करेंगे इन. आर यू गेटिंग दैट, जय? नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड क्या है? छोटी मोटी जगह है क्या? नहीं, बहुत बड़ी है. आई गेटिंग दैट, मिस ज्योति? सो आई एम Yes. living in India, so India is big. I live in Pune. Pune is big. Yes or no? For Yes. example, there are many countries in the world. World is also big. So when something is big, we're going to use their in. Point number 2. So we are going to use here in for when something is inside, and when something is big, we're going to use their in. All right. Second thing, as you can see here, on. When are we going to use their on? We are going to use on for surface. अब surface का मतलब क्या होता है? When something is there on some kind of base, कोई base के ऊपर रहेगा, उसके ऊपर कोई अगर चीज रहेगी, उसको हम लोग बोलेंगे surface. Now for example, this is my hand and nothing is there on the hand. हाथ पर कुछ नहीं है. Correct? So this is called the surface. ये surface बना. Now I'm just keeping this phone on my hand. I can say this now. The phone is on my hand. The phone is on my hand. मेरे हाथ पर फोन है. So the phone is on my hand. अब ये जो हाथ है, ये क्या बना? इसका surface है. Yes or no? When something is on the surface, we are going to use their on. ये इसका surface है, ये इसका base है. बिना इसके ये फोन टिक सकता है क्या यहाँ पे? No. So this hand became the surface. For surface, we are going to use their on. Simple. Where am I sitting right now? I'm sitting on a chair. So this is the chair and I'm sitting on a chair. मैं chair पर बैठा हूँ. Now in front of me, मेरे आगे मेरे सामने रखा हुआ क्या है? That's the desk. ये desk रखा हुआ है मेरे आगे और उसके ऊपर मैंने रखा हूँ laptop. So where is the laptop? The laptop is on the desk. तो जो desk है वो desk के ऊपर laptop है. आप समझे मेरी बात? So this is what this desk will be the surface. ये chair मेरा surface है, जिस chair के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ. So ultimately, the chair is my surface. The desk is the surface for the laptop. Are you getting that? So simple, we are going to use their on for surface. Is that clear to all of you? समझा? Yes, sir. See, please, बिंदास Sir, बोलना I है. have नहीं one समझा, question. नहीं समझा. Yes, yes, जाए. मुझे वो लोग बहुत अच्छे Sir, लगते हैं जो frankly बोलते हैं मुझे नहीं समझा. मुझे समझा, इनके मुझे सर नहीं अगर समझा. बोलना हो कि मैं बस में हूँ, then what वेरी गुड time? बॉय. वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? I'm on a bus. वो क्यों, क्या, कब, कैसे, वो अपन देखेंगे थोड़ा आगे चल के. Now And I'll sir, tell you car one more also. thing. I'm in car. Wait. आप जैसे कि आप लोगों ने सुना रहेगा, आप लोग बोलेंगे यार टीचर लोगों को ज्यादा बोलता है. टीचर लोग को बोलना चाहिए मैंने, क्योंकि वो टीचर लोग ने हमारे करियर का सत्यानाश मारा है. सॉरी टू से दिस. हम लोग को बाल भारती पढ़ाया और बैल भारती बना दी हम लोगों ने. वाई? बिकॉज उनका काम था कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम हमारा बता रहा है, आधे से ज्यादा तो नॉनसेंस चीज है वो. टीचर आवर टीचर taught us
हम लोगों को टीचर ने क्या स्कूल में पढ़ाया है, क्या पढ़ाया हमको स्कूल में कि राजू इज गोइंग इन द बस। हा, वेरी नाइस। राजू बस में जा रहा है तो उसका ट्रांसलेशन मारा वहां पे टीचर ने, राजू इज गोइंग इन द बस, जो कि बिल्कुल गलत है। वी कांट से इन बस, वहां पे लगेगा ऑन। नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन टू मी एंड सी, माय ओल्ड स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू आंसर एनीथिंग, ओके? जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स है पुराने चावल आंसर देना नहीं। आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात है, आंसर अपने पास में रखो, मैं सिर्फ न्यू लोगों से पूछ रहा हूँ। नाउ एज यू कैन सी हियर, जैसे भी यहाँ पर जय ने पूछा है कि यहाँ पर क्या करेंगे, हमने बस के लिए क्या लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त का फोन आया, आप लोग बस में जा रहे हैं, वो आपको पूछ रहे हेलो वेयर आर यू, तो आप लोग क्या बोलते हैं? मैं बस में हूँ। ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं बस में हूँ। मैं हूँ मतलब मैं बस के अंदर हूँ, है ना? गलत। आप लोग बोलते हैं वहां पे I'm in the bus, I'm in the bus, this is absolutely wrong। आपको वहां पे बोलना चाहिए I'm on the bus। आपको वहां पे बोलना चाहिए I'm on the bus, this is absolutely correct। ये करेक्ट है बिल्कुल। On the bus is correct। on लगाना है वहां पर, in लगाना ही नहीं है। Same case, pay attention। We're going to use there I'm on the ship। Next, I'm on the plane, I'm on the truck, I'm on the train। Are you getting that? Next, अब in किसके लिए लगेगा? I'm on the ship, I'm on the plane, I'm on the truck, I'm on the train, I'm on a bus। in लगेगा, for example, I'm in the car। मैं कार के अंदर हूँ। I'm in the boat, I'm in the bed। हाँ, बेड के लिए in कैसे लगेगा? वो भी एक चीज है। I'll be proving it right now। Next, I'm in the bed, I'm in the boat, I'm in the car। Next, अब on और किसके लिए लगता है? Next, I'm on the bike, I'm on the horse। घोड़े पर हूँ। I'm on the donkey। गधे पर हूँ। तो लिटरली कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग वहां पर, ओके? यहाँ पे लगता है on, इसके अंदर लगता है in the car, in the boat, in the bed, etc। ओके? क्या, क्यों, कैसे, इसका आंसर आप लोगों को मिला क्या? मिला रहेगा तो मुझे बोलो, नहीं मिला रहेगा तो कल आप लोगों को लेकर आना है, क्योंकि आगे का टॉपिक है ये। ओके? कोई भी बाबा जी को पूछ लेना कि इसका आंसर ऑन यहाँ पे क्यों आ रहा है, ट्रेन के लिए ऑन क्यों लगाते हैं। दोस्त का फोन आया, अरे कहाँ है? अरे मैं ट्रेन में हूँ। हिंदी में तो यही बोलते हैं, मैं ट्रेन में हूँ। वो हिंदी बिंदी का सही है। डू नॉट ट्रांसलेट एनी लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, लिटरली ट्रांसलेट करते, कुछ तो भी नॉनसेंस बनाते हैं। ट्रांसलेट करना ही नहीं है, कोई भी लैंग्वेज रहे हो भाई, ट्रांसलेट आपको करना है ही नहीं। सिंपल इट इज। ट्रांसलेशन नहीं चलता है कोई भी लैंग्वेज के अंदर, ओके? सेम केस, इन बेड, बेड के लिए इन क्यों यूज हो रहा है? ऑन यूज होना चाहिए ना। क्यों, क्या, कब, कैसे, वो हम लोग देखेंगे आगे चलकर, ओके? ये जय का एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग पेंडिंग अभी रखे हुए, ठीक है? लेट्स गो अहेड। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसके ऊपर फोकस करो फिलहाल में। In, on, and at. These are the basic three prepositions we have in English. Those are what? In, on, and at. We are using in when something is inside and when something is big. Point number two, we're going to use their on for surface. Point number three, at we are going to use for exact time and exact position. For example, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ पे आप लोगों का दिमाग चेक होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल, हमारा जय है, प्यारा जय। जय को एक आधी काम वाली बाई मिली और वो काम वाली बाई ने पूछी जय को, हेलो जय, वुड यू लाइक टू मैरी मी? जय बोला यस 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 यस, आई वांट टू मैरी यू इमीडिएटली। शी सेड ओके, प्लीज मीट मी एट कॉलेज। प्लीज मीट मी एट कॉलेज। अब ये क्वेश्चन के ऊपर से डिसाइड होगा कि जय की शादी उसके साथ में होती है कि वो जय को छोड़कर जाती है। तो बेटे जय, आप कहाँ मिलेंगे उसको कॉलेज को? शी सेड प्लीज मीट मी एट कॉलेज। यस, प्लीज मीट मी एट कॉलेज। कहाँ मिलेंगे आप उसको? कॉलेज के बाहर। कॉलेज के बाहर, दाबेली वाले के यहाँ पे मिलेंगे क्या? कैंटीन। मिस आसमा, ओके, मिस ज्योति सेइंग कैंटीन। मिस आसमा, please Yes, meet me sir. at college। If someone is asking you please meet me at college, where are you going to meet that person? In the garden. College, sir.
इन द गार्डन, हाँ 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 हाँ, कॉलेज में, कॉलेज में, कॉलेज में ना सर, कॉलेज में किधर मैम? कॉलेज की सर गेट पे। मेन गेट हो सकता है, मेन गेट Correct, गेट। के exactly. Here it is the right गेट के answer. Gate. Why? Why? If the person is saying, please meet me at college, what do you mean by at? We're using at when something is the exact position. For exact position, we are going to use there at. अब college के exact position क्या है? That's what? The gates. That's the गेट। gate of the college. अब कॉलेज में कैसे विंडो से जाते हैं अपन, बराबर ना? करेक्ट? नो सर, नहीं, कैसे जाते? गेट से जाते हैं ना. सो लिटरली गेट गेट्स। इज द एग्जैक्ट पोजीशन. जाके वो मैं अंदर कैंटीन में बैठा, गार्डन में बैठा, कॉलेज के लाइब्रेरी में जाके बैठा, मैं बोले हेलो मैम एट कॉलेज, गलत. वहीं पे वो बोलेगी आई एम नॉट मैरिंग यू, बाय, बिकॉज यू डोंट नो इंग्लिश, प्लीज ज्वाइन कैम्ब्रिज ट्यूटोरियल्स. सो फॉर एग्जाम्पल, please meet me at college. If someone says to you, please meet me at college, so literally बिना किसी एड़े चाले के आपको जाकर मिलना है वो बंदे को कॉलेज के गेट पर. रिश्ता पक्का. क्यों भाई? क्योंकि वो गेट पर मिला, उसको इंग्लिश आती है. इज दैट क्लियर? सो द एग्जैक्ट प्लेस वी आर गोइंग टू यूज देयर एट्स. इज दैट क्लियर? अब अब मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए, ताकि आप लोगों के भेजे में चले जाइए. चैप्टर मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया. बुक रेडी है, आपके सामने दिख रहा है, बट मैंने अभी तक के बुक को हाथ लगाया क्या? नो. आई एम टीचिंग यू फ्रॉम माई साइड, क्योंकि ये लोकल जो डेफिनेशन आपके भेजे में जाएगा वो बुक से नहीं जाने वाला, मुझे मालूम है. बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011, आई कैन से. सो अल्टीमेटली 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, एंड आई नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट. लिटरली जब मैं 15-16 साल का था, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ. सो स्टूडेंट्स का क्या रिक्वायरमेंट है मुझे पता है कि कैसा क्या दिमाग में जाने वाला है. खाली वो जो होता है ना, व्हाट इज ग्राफीम, तो अपने टीचर से ऐसे जाते थे. ओके, राइट डाउन बेबी, व्हाट इज ग्राफीम? ग्राफीम, अ ग्राफीम इज अ linguistic unit in language in use which has some meaning. समझा बच्चों? समझा बच्चों? तो बच्चे बोलते थे हाँ 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 हाँ, समझा समझा. उसमें से अगर एक आधे ने कभी ने, एक आधे रप्पी के शप्पी ने अगर कभी ऐसे ऐसे गलती से ऐसा वो एक्सक्यूज मी मिस, मिस, वो ग्राफिन क्या रहता? हाँ, आपको पता नहीं है, कहाँ ध्यान था आपका? अब वो बच्चा वहां पे बेचारा डर के बैठ गया. सॉरी, मैंने बाप रे मलकुल मत को बुला लिया था मैंने तो. अब वहां पे टीचर ने जो चिल्लाया, पूरा साल चले जाता है, बाकी स्टूडेंट बोलते हैं बाप रे बहुत डेंजर चिल्लाते हैं यार मैडम, यार जान दे, मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ. वहां पे बच्चा पूछता ही नहीं है, आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिखता है, बराबर 35 पे तड़प तड़प के पास होता है. अरे वो बच्चे को ये समझेगा कैसे? ये डेफिनेशन किसके भेजे में घुसने वाला है? व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक यूनिट? व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज इन यूज? किसको समझने वाला है ये? सो अपन खाली मीनिंग लेते थे. निराली, प्रगति, विजन, सैफी, नवनीत, नॉनसेंस पढ़ते थे, कुछ भी ठोकते थे, वैसे पास हो जाते थे. ये आपका ही नहीं, मेरा भी हाल था. सॉरी टू से दिस, बाय द वे, फॉरगेट दैट. सो लिटरली इफ वी आर गोइंग टू सी हियर इन ऑन एट, इसका प्लेटफॉर्म क्लियर है भी आप लोगों का, लोकल वाला, कि कहाँ पे यूज होता है. इन वी आर गोइंग टू यूज व्हेन समथिंग इज इनसाइड, व्हेन समथिंग इज बिग. ऑन वी आर गोइंग टू यूज फॉर सरफेस, and at we are using for exact position. Okay, any doubts to anyone? Such bolo please. Any doubts? Yes, sir. Yes, please ask. Again Sahili, please ask. वो समझा ही नहीं सर, ऑन द बस वो क्यों आया? वो छोड़ दो, मैंने वो क्या बोला ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ. मैंने वो बताया नहीं अभी तक कि ऑन क्यों आया उधर. वो तो मैंने होमवर्क दिया, सर ऑन आया क्यों. आपको उसके सर आगे फिर जाने से पहले, एक मिनट, हाँ प्लीज, उसके जाने से पहले आगे देखेंगे हम लोग वो क्यों आया, कैसे आया, ताकि आपको पता तो चले कि वो करेक्ट क्या है. अपनी जो फाइल है, जो बुक मैंने लिखा हुआ हूँ, ये अपनी खुद की लिखी हुई बुक है. इसके लास्ट में मैंने कैम्ब्रिज के कुछ पेजेस मैंने लिया हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में मिल सकती है. तो आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो जा रहा हो. पे अटेंशन प्लीज. फ्री टाइम, इसमें एक आर्टिकल है फ्री टाइम. वेल द वेल व्हेन आई एम ऑन अ बस आई यूजुअली गो, आई रीड मैगजीन. सी यहाँ पर एक आर्टिकल है 7.1 फ्री टाइम. वेल
When I'm on a bus, बस के लिए ऑन लगाया देखो उसने. When I'm on a bus, I usually read a magazine or sometimes I play a computer game or maybe listen to music. In my lunch break, oh, sometimes I have a burger, maybe go to the park, sometimes I play football after lunch. Next, आगे कुछ लिखा है उसने. Well, when I'm ill in bed, bed के लिए in लगाया. Okay. Usually I just read a book maybe or watch videos or if a friends there I play cards maybe. तो bed के लिए in लगाया. ये मेरा नहीं लिखा हुआ, ये कैम्ब्रिज की बुक से लिया है मैंने. वो बुक मेरे पास में है, बेफिक्र रहो, बुक्स मेरे पास में है. वो बुक के अंदर अंग्रेज लोगों ने खुद लिखा है बेड के लिए इन लगाते और बस के लिए ऑन लगाते. ठीक है, क्यों लगाते हैं वो अपन देखेंगे बाद में, वो हमारा एक नया अलग क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे हम लोग. मिस शाइमा, कैन यू प्लीज कंटिन्यू मिस शाइमा. मैडम फुटाने में बिजी है. चलो यहाँ पे ध्यान दो. इफ यू सी देयर इन ऑन एट, तो जो मैंने आप लोग को अभी बताया, डू यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट? No, sir. गो अहेड. अब फॉर एग्जांपल हमारा जय है, ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ. वो बताने वाला क्या हूँ मैं आपको? एड्रेस. ओके, एड्रेस में बताने वाला हूँ. कौन सा एड्रेस है? जय की एक गर्लफ्रेंड है, एलियन है वो, और उसको हमको बुलाना है अपने क्लास पर. ठीक है, अब वो एलियन को बुलाएंगे कैसे अपने क्लास पर? सो बुलाने के लिए वहां पे यूज करेंगे हम लोग प्रीपोजिशन. एड्रेस बताने के लिए लगता क्या है? प्रीपोजिशन लगता है लिटरली. एंड इफ यू डोंट नो प्रीपोजिशन, मे गॉड हेल्प यू. सिंपल इट इज. जब हम लोग उसको बोलेंगे, ज्योग्राफी वगैरह अगर आप लोगों ने कभी बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहना चाहिए, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ. वी आर गोइंग टू से फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर. दाखिल होना है आपको. कहाँ भाई? इन द ब्लैक होल. नेक्स्ट, देन एंटर in the cosmos. Next, enter in the universe. Universe में आना है. Next enter in the galaxy. Universe में आने के बाद में galaxy में आएगी वो, और अपने galaxy का नाम क्या है? मिल्की वे. ओके, नेक्स्ट वर्ड. उसके बाद में enter in the galaxy. Wait a minute. Thank you. गैलेक्सी में आने के बाद में एंटर इन द सोलर सिस्टम. वो हमारे सोलर सिस्टम में आएगी अंदर. नेक्स्ट, सोलर सिस्टम में आने के बाद में उसको बोलना है एंटर इन द सोलर सिस्टम एंड आफ्टर दैट कम ऑन द अर्थ. फिर अर्थ पे आ जाना है. नेक्स्ट, ऑन द अर्थ एंटर इन द एशिया. एशिया में आना है. ओके, उसको एशिया नहीं एशिया बोलेंगे, रियल प्रोनाउंसिएशन एशिया है उसका. देन एंटर इन इंडिया. नेक्स्ट, एंटर इन इंडिया में कहा भाई? महाराष्ट्र. नेक्स्ट, एंटर इन पुणे. महाराष्ट्र में किधर? पुणे. एंटर इन कैंप. पुणे में किधर? कैंप में. कैंप में आने के बाद में भाई, क्लास के अंदर नहीं ले सकता मैं उसको, रिस्क के अंदर, थोड़ा कोरोना चल रहा है. एट कैम्ब्रिज ट्यूटोरियल्स. एग्जैक्टली, समझा? अब यहाँ पर मैंने मेरे भाइयों और हम सबकी बहनों ध्यान दो. इन द ब्लैक होल इन यूज किया, इन द कॉस्मोस इन यूज किया है, इन द यूनिवर्स इन द गैलेक्सी इन द सोलर सिस्टम इन. ओके, सबके लिए क्या यूज किया वहां पर? इन. नेक्स्ट वन, ऑन द अर्थ. आई एम यूजिंग हियर ऑन. Then again in Asia, in the Asia, दो नहीं आएगा यहाँ पर भी. In Asia, next in India, next in Maharashtra, next in Pune, next in camp, and then next at Cambridge tutorials. If you see here, system simple है हमारा, मैंने जो आपको पढ़ाया था वही आएगा यहाँ पर भी. If you see in the black hole is big. पता है ना? पता है ना, ब्लैक होल बहुत बड़ा है. किसी को आज तक मालूम ही नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है. साइंटिस्ट लोगों को भी मालूम नहीं है. कॉस्मोस, एक ब्लैक होल के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस कॉस्मोस है, उसके अंदर से एक कॉस्मोस के अंदर आना है. कॉस्मोस बहुत बड़ा होता है. ओके,
उसके बाद में एक कॉस्मोस में आने के बाद में देखेंगे तो मिलियंस एंड बिलियंस यूनिवर्स मिलेंगे. यूनिवर्स इज ऑल्सो वेरी बिग. So in the universe, big. Galaxy is also very big. After entering into the universe, we are going to enter into the galaxy. So galaxy is also big. We are going to use their in. After entering into the galaxy, our solar system is also very big, and that solar system we are going to use their in the solar system. Okay, next one. अब सोलर सिस्टम में आने के बाद में अपने पास में बहुत सारे प्लैनेट्स है. करेक्ट. अपने सोलर सिस्टम में जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, मार्स है, अर्थ है, मून है. सो आवर अर्थ इज स्मॉलर देन जुपिटर, मार्स एंड ऑल. एम आई राइट? सन वगैरह से भी स्मॉल है. और अपन कहाँ रहते हैं भाई? जमीन के अंदर घुसड़ के दफने में तो है नहीं ना अपन. जमीन के ऊपर पर ऊपर रहते हैं हम लोग. वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ. एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? सो हम Yes. लोग सरफेस के ऊपर रहते हैं और सरफेस पे क्या लिखेंगे तो क्या आएगा? ऑन द अर्थ. इज दैट क्लियर? समझा? सो ऑन द अर्थ, दो वजह है उसकी. वजह तुम हो. ऑन द अर्थ की दो वजह क्या है? एक तो हम लोग ऊपर रहते हैं जमीन के. दूसरी बात, जमीन जो है भाई वो है छोटी बाकी प्लैनेट से. नेक्स्ट वन, इन एशिया. अब एशिया छोटा बेटा है क्या? नहीं, बहुत बड़ा है ना. बाकी दूसरे कॉन्टिनेंट्स एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा है. नेक्स्ट, इंडिया. इंडिया इज ऑल्सो बिग कंट्री. इन इंडिया, महाराष्ट्र बिग, बिग स्टेट इन महाराष्ट्र. पुणे बिग सिटी, पुणे. कैंप एटलीस्ट बिग प्लेस. बड़ी है ना, अपने से तो बड़ी है, अपने घर से तो बड़ी है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज देयर इन कैंप. एंड नेक्स्ट वन, कैम्ब्रिज ट्यूटोरियल्स. ये कहाँ भाई? क्लास के अंदर आना नहीं, क्लास के गेट पे रहना. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझा? यस सर. सो ये था हमारा इन, ऑन एंड एट. एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी डाउट्स? No, sir. नो सर. लेट्स गो अहेड. अब मैं अपना बिना किसी नाटक के चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ. As you can see here, chapter number 1, places 1, in, at and on. Now when do we use in? अब आप लोगों को मालूम है in use कहाँ पे होता है? मैंने आपको पहले बताया. When do we use in? When something is big Inside. and when something is inside. Okay, next, in. For example, we can say in room, in a shop, in a car, in the water. In a room, in the shop, in the water, in a car. So when something is big. Next, in a garden, big. In a town, big. In the city center, big. In Brazil, big. In the shop, when something is inside. In the car, when something is inside. In the water, when something is inside. In the room, when something is inside. Yes or no? So यहाँ पर क्या आएगा? This is what for inside, and this is what for something is big. All right. Next, for example, where is David? He's in the kitchen, in the garden, in London. In the kitchen, inside. In the garden, inside. In London, big. What's in that box? Inside the box. What's in that bag? Inside the bag. What's in that cupboard? Inside the cupboard. Raquel works in a shop. She works in a shop. She works in a bank. She works in a factory. In use करते हैं वहाँ पर भी. Next, I went for a swim in the river, in the pool, in the sea. Next, Milan is in the north of Italy. So Milan is in the north of Italy. In India, in Italy. Next, Naples is in the south. Naples is in the south. Milan is in the north of Italy and Naples is in the south. I live in a big city. Answer दे डाला उसने भी वहाँ पर. I live in a big city. So when something is big, we're going to use it in. Is that clear to all of you? समझा? So I live in a big Yes, sir. city, but I'd like to live in the country. In the country मतलब देहात की बात कर रहा है वो, विलेज की. I live in a big city. मैं सिटी में रहता हूँ पर मुझे पसंद क्या है? देहात में, गांव में रहना. Is that clear to all of you? Clear? यस सर. Simple. Yes, sir. बहुत बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं. I want you people to speak up right now. Speak up. Hello.
Hello. I'm in a Correct. Yes, Yes, sir. ma'am. Amina. I'm in a library. Correct. I'm in library. Next. My mom is in the kitchen. Good. Next. जिसने भी सेंटेंस नहीं I'm बनाया in. मतलब वो बंदा डोंकी है, ठीक है? चलो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कौन डोंकी है कौन नहीं. चलो. I'm in room. Good. Next. I live in Pune. Good. Next. I am on the terrace. गुड. यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, अगर आपको नहीं आता है एटलीस्ट इनको चोर के सेंटेंस बना दो. इनको ये वाले वर्ड्स को सबको सेंटेंस बना दो इनके ऊपर. जल्दी जल्दी और भी जल्दी. I'm in Belgaum. I'm in college. गुड. She works in a bank. गुड. I'm in. I am on the way. गुड. I am on the way. I will go in the shop. जय 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 जय. सबर का इम्तिहान मत लो. मेरा इन चल रहा है मेरे भाई. ऑन नहीं चल रहा है मेरा. ऑन पे अभी तक मैं आया नहीं दोस्त. इन चाहिए मुझे. Okay, sir. यस. I'm गो in ऑन. the kitchen. आई मीन द किचन. नेक्स्ट. He teaches in college. ही टीचर्स इन कॉलेज. नेक्स्ट. Pencil is in book. She works in office. नेक्स्ट. वेरी गुड. I वेरी गुड. acted in the play. She works in an office. I am active. What? I acted in the play. I acted in the play. Very good. But ये idea के लिए use हो रहा है, हाँ मैम. ये मैं आगे I बताने am वाला हूँ. Indian. Okay. I'm Indian. Mr. फेकू. इनका है वहाँ पर. Next. Miss Mahek, next speak up. Miss Jyoti, My speak up. colony is in posh area. Good. My colony is in posh area. Next. She lives in the country. Good. She lives in the country. I'm in garden. I'm in the garden. I'm playing in ground. I'm Played playing in a the ground. shop. Correct. In a I'm shop. sitting in a room. In a room. Mobiles are discussed in a I'm shop. in the cafe. Correct. In the shop. I'm in the bank. Ice cube Yeah. in the ashtray. In the mall. Correct. Ice cube is in the ice tray. In the mall. Yes. I saw tears in her eyes. Correct. I saw the tears in her eyes. Next. I will go in the hotel. In the hotel. We play in a garden. Correct. In a garden. I'm in the theater. In the theater. Please, all of you make sentences. Miss Jyoti, Miss Sahana, Miss Asma, make sentences, please. Make sentences. Jaldi, jaldi. Miss Muskan, make sentences. Ma'am, make sentences, please. She lives in my country. She lives in my country. Meet me in restaurant. Correct. Meet me in a restaurant. Yes. Mr. Mustaqim. Mr. I will Raza. go in the village. I will go in the I'm in village. the kitchen. I'm in the kitchen. Sir, I am travel bike. Okay. In okay, the okay. car. Please take care of yourself. Please take I'm in care of the yourself. He's in the car. I saw dolphins in the sea. Correct. I saw the dolphins in the sea. I'm in a temple. I'm in a temple. He lives He's in a large house. He lives in a large house. He's in a boat. He's in a boat. Next. In. Sentence नहीं बनाएंगे भूल He जाएंगे. was going in the church. Good. In the church. Book in the cupboard. Correct. In the cupboard. I kept the Read clothes the in the book. cupboard. The cat is in the cupboard. Correct. In. He's in the university. He's in the pink. He's in the pink. There's a heavy pollution in a town. Correct. There's heavy pollution in the town. In the book. In the book. Make sentence. She's in the hospital now. He's in the hospital now. The book is in this bag. The book is in the bag. I am in the ground. I'm in the ground. Many Yes. rotten apples are in this area. Many rotten apples are in this area. Very nice. Yes. Vegetable in the fridge. Good. Vegetables are in the fridge. Very nice. He is enjoying in the pool. He's enjoying in the pool. There are many fruits in the table. There are many free fruits in the table. No. Table के लिए on आएगा. On the table. In the I put the key in bag. fridge we can say. I put the things in the bag. The samosas I have to are go in the bank.
In the bank. The Water samosa in my in mind. my tiffin. In my lunchbox. Tiffin nahi, lunchbox. Yes, lunchbox. Third person in my mind. Correct. Water In in my my mind. pocket. She's working in a There is multinational some water Okay, company. in a bottle. In the bottle. Yes, ma'am. heavy traffic in a city. Correct. There's heavy traffic in the city. Anything else? Children plays in ground. Correct. He There plays is in the few. ground. There is There are few He water is in bottle. there is little water in the bottle. Little, not few. Hair is in the pump. Here is he in is the working in the comb. big company. He's working in a big company. I am interested in swimming. Very good. I'm interested in swimming. ये भी idea के लिए sentence use होता है. Okay. Any doubts to anyone with in? No, No, sir. sir. I'm moving ahead. Now at. When do we use at? Guys, when do we use at? For For exact A place. specific time in particular exact area. exact Exact position. position. We're going to use there at for exact Exact position. position. टाइम के लिए इतना ज्यादा नहीं, वो अपन आगे देखेंगे, but we are going to use there at for exact position. For example, at the bus stop. Why are we using at the bus stop? क्योंकि ऐसे bus stop ऐसे 50-60 जगह पे ऐसे फैला हुआ रहता है, बराबर ना? हाँ बोलो. हेलो. Yes, sir. No, sir. नहीं. बस No, स्टॉप sir. बोले तो बराबर एक No. प्रॉपर जगह रहती है. Yes or no? Yes, sir. Yes, That's why sir. we Yes, sir. call it Yes, at sir. the bus stop. That's why we call it at the bus stop. Exact place. Next, someone is knocking at the door. Why at the door? अब door कैसा है, सब पूरा घर का पूरा door बना डालते हैं, है ना? No, No. sir. No. चलो जागे मतलब आप लोग सो नहीं रहे. So at the door means what? Exact place. Next, traffic lights का मतलब होता है signal. The car is at the signal. The car is at the traffic light. So traffic lights signal भी क्या होता है? Exact place है. Yes or no? Next Yes, one. sir. Yeah. Yes, sir. तुम्हारी भाभी is working at her desk. She's working at her desk. So she's working at Desk. her desk. So as the desk means what? It is the exact place. Yes or no? Yes, sir. Yes Yes, or sir. no? Very good. Next one. Now pay attention here. There's somebody at the bus stop. There's somebody at the door. So there's somebody at the bus stop. There's somebody at the door. Next one. The car is waiting at the traffic lights. The car is waiting at the traffic lights. Vicky is working at her desk. Vicky is working at her desk. All right. Desk. So we are going to use here at for exact position, exact place. All right. Let's go for the next one. अब यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है ध्यान देते हैं हम लोग. For example, at the top, at the bottom, at the end of something. अब यहाँ पे at the top, at the bottom, at the end of क्यों लिखा है? पिक्चर को मैंने जूम किया है. Have a look here. Now we are saying at the top, at the bottom. Pay attention, all of you. What is this? At the top मतलब top ये रहेगा. Exact place है कि नहीं है? क्या मैं इसको top Yes, sir. बोलूँगा? No. क्या मैं इसको top बोलूँगा? No. No. क्या मैं No. इसको top बोलूँगा? No. So top means what? Only this one. This is what at the top. Correct? Next, at the bottom. Yes, this is the exact place of the bottom. Yes or no? So at the bottom. Exact place के लिए at लगेगा. Pay attention. I'm asking a question. Middle के लिए क्या लगेगा? In middle. Correct. In middle. In the In middle. middle. Center के लिए क्या लगेगा? Obviously In in the center. लगेगा. In the center. In the center. In the middle. In the center. In the middle. क्यों भाई? क्योंकि middle का space बड़ा है. Yes or no? And when something is big, we are going to use their in. आया answer? समझा? Yes, sir. Simple. In the center, in the middle. दो चीजें हैं. In the center, Yes, in the sir. middle. When something is big, we're going to use their in. Simple. Simple सी चीज है. All right. So in the center, in the middle, we're going to use their in. Any doubts to anyone? No. No, sir. Simple it is. So at the bottom of the page, at the top of the page, at the bottom of the page, at the top of the page. Next one, as you can see here, at the bottom, at the top. Write your name at the top of the page. क्या हुआ इसको? Sorry, huh? Sometimes it is troubling me a lot. Okay, so we're going to use there at the top, at the
bottom. At the top, at the bottom. So for example, write your name at the top of the page, and my house is at the end of the street. Why at the end of the street? For example, suppose अब जैसे कि street है और मेरा घर यहाँ पर है, at the end of the street, तो यहाँ पे at क्यों लग रहा है? क्योंकि end क्या है? Obviously एक particular place है. Exact place है ना end? Yes, sir. Yes or no? So I can say at the end of the street. My house is at the end of the street. So this is what my house, and my house is at the end of the street. Any doubts to anyone? No. No, sir. Any questions? Simple it is. थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा मुझे मालूम है. एट के साथ में आप लोग सेंटेंस जनरली बनाते नहीं हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, दैट्स के लिए थोड़ा सा टफ जाएगा, बट स्टिल कैन यू प्लीज मेक सम सेंटेंसेस विद एट? Look at me. करेक्ट, लुक एट मी, बट ये आइडिया के लिए यूज हो रहा है. Idea. ये आगे टॉपिक आने वाला है, उसके लिए बताऊंगा मैं आपको. Okay. अब एक और चीज है, ध्यान दीजिए प्लीज ऑल ऑफ यू. अब ये जो इन, ऑन, एट, मैंने आपको खाली लोकल डेफिनेशन बताया. हाँ, मैंने आपको अभी तक की रियल डेफिनेशन पे मैं आया नहीं. इसके लिए एक और चीज है, वी कैन यूज देयर इन फॉर activities and ideas. Same case, we can use on for activities and ideas. We can use at for activities and ideas. मतलब एक एक इन के कम से कम 10-10 यूसेजेस है. एक एक ऑन के 10-10 यूसेजेस है. एक एक एट के 10-10 यूसेजेस है. मतलब एट अलग 10-10 जगहों पे यूज होता है, ऑन अलग 10-10 जगहों पे यूज होता है, इन अलग 10-10 जगहों पे यूज होता है. क्यों भाई? क्योंकि ये है इंग्लिश. सिंपल इट इज. इंग्लिश में आपको मैंने पहले भी बताया था, इंग्लिश में अगर आप लोग देखेंगे, एक जीरो को बोलने के कितने टाइप है इंग्लिश में? 7. कितने? 7. इंग्लिश में एक जीरो को बोलने के 7 टाइप है अपने पास में. कितने भाई? एक जीरो को बोलने के हमारे पास में इंग्लिश में 7 टाइप है. व्हाट आर दोस्त? कौन कौन से हैं? जीरो को हम लोग बोलते हैं जीरो. O भी बोलते हैं ना. करेक्ट. नंबर्स की जब हम लोग बात करते हैं वो 0 1 2 3 नंबर्स में जीरो बोलते हैं. ओ बोलते हैं हम लोग टाइम के अंदर, डेट्स के अंदर, रूम नंबर्स के अंदर, अलग Love. अलग जगह पर ओ बोलते हैं. Love duck. लव, लव बोलते हैं टेनिस में. सानिया मिर्जा Not. बोलते हैं. Duck. नेक्स्ट, Meal. नॉट बोलते हैं हम लोग साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजीज के अंदर. Nearly. नल बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में. नील बोलते हैं हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में. डक बोलते हैं हम लोग क्रिकेट के अंदर. सो लाइक दिस वी हैव 7 टाइप्स ऑफ सेइंग 1 0. याद आ रहा है कुछ मैंने बताया था जय? Yes, sir. Yes, sir. सो एक 7 को, एक 0 को इंग्लिश में बोलने के 7-7 टाइप है. तो सोचो एक इन को यूज करने के कितने टाइप्स होंगे इंग्लिश में? 10-10 टाइप है एक इन को यूज करने वाले. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेनी आइडियाज इन माई माइंड. सो माइंड कौन सी कैटेगरी में आएगा? ना इनसाइड वाली कैटेगरी में आएगा, ना बिग वाली कैटेगरी में आएगा. वो आएगा आइडिया की कैटेगरी में. ही वॉज इन्वॉल्व इन द मर्डर. ही वॉज इन्वॉल्व इन द मर्डर. सो मर्डर कौन सी कैटेगरी में आएगा? मर्डर कोई इनसाइड वाली चीज तो है नहीं, ना कोई बड़ी चीज है. इट इज द एक्टिविटी, एक्टिविटी वाली कैटेगरी में जाएगा वो. तो क्यों, क्या, कब, कैसे देखेंगे हम लोग आगे के एपिसोड में. स्टार प्लस पे आते रहिए. पहले यहाँ पे सेंटेंस बनाओ. नेक्स्ट सेंटेंसेस. सर एट का एक बार फिर से बताओ ना. एट हम लोग कहाँ यूज करते हैं गाइस? फॉर एग्जैक्ट प्लेस, फॉर एग्जैक्ट Exact पोजीशन. position. करेक्ट. एग्जैक्ट पोजीशन जहाँ पर रहेगी हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे एट. जैसे कि फॉर एग्जांपल एट द बस स्टॉप, तो बस स्टॉप एग्जैक्ट प्लेस है. एट द डोर, डोर एग्जैक्ट प्लेस है. एट द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स एग्जैक्ट प्लेस है. एट द डेस्क, डेस्क एग्जैक्ट प्लेस है. नेक्स्ट, एट द टॉप एग्जैक्ट प्लेस है एट द बॉटम एग्जैक्ट प्लेस है. मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस रहेगी वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एट, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर. एट. एट द वॉल, वॉल पर. ऑन द वॉल भी बोलते हैं, गलत नहीं होगा. एट द गेट, गेट पर, मतलब उसका ऐसा होता है. बस स्टॉप पर, एट द बस स्टॉप. डोर पर, दरवाजे पर कोई तो भी दस्तक दे रहा है, एट द डोर. मैं सिग्नल पर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट द ट्रैफिक लाइट्स. मैं मेरे डेस्क पर काम कर रहा हूँ, डेस्क पर काम कर रहा हूँ, आई एम एट माई डेस्क. समझा मैडम? समझ में आया? Yes, sir. इतना है. Yes sir. एट. कैन यू पीपल प्लीज गिव मी सेंटेंसेस? जब आप लोग सेंटेंसेस बनाते हैं ना, तो वो टाइम पे आप लोग का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है. और अगर आप लोगों ने खाली सोच के शोएब भाई के ऐसा अगर खाली आप लोग बैठे बोले नहीं, तो कंसेप्ट क्लियर कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है. आप लोग को सेंटेंस देना ही पड़ेगा. ओके.
Please give me some sentences now with ats. My father Please, is waiting at the door. Correct. please write your name. At the. Please, Please write your name at the please top. write your name at the top and signature at the bottom. Correct. Very good. Next. Look at the building. Correct. He's at a party. आइडिया के लिए यूज हो रहा है ये. Next. Please meet me at my school. I go to bed at 10. Correct. At 10 टाइम के लिए यूज हो रहा है. Someone At knocking school. at the door. Good. At the restaurant. Yes, ma'am. He was shot at the restaurant. रेस्टोरेंट की गेट पर. Good one. Next. I will meet you at police station. At the police station. Very good. Look I at the learned red to type letters. at the age of 16. Correct. This is for idea at the age of 16. Very good. My mother put the vegetables at the desk. At the desk. Very good. ATM machine is I at the was airport. at home. I was at home. ATM machine is at the Airport. at the airports. Airport के गेट पर ही ATM machine. Good. Next. Meet me at station. Meet me at the station. I have my tuition at I study hard at school. Correct. She studied very hard at school. I have class at 8 o'clock. Next. I kept it at the I bottom. will meet my Correct. friend at the school. At the bottom. At the school. Very good. At. I will reach that. I will reach there at 9 o'clock. I will reach there at 9. Next. At. She look at him. ये भी हो सकता है ना? She look at him. She looks at him. बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते My हैं. She looks students at him. are waiting for me at the bus stop. Correct. At the bus stop. He is working at company. She's working at the company. She's at the store. She's at the store. You will get it at the end of the session. Correct. You will get it at the end of the session. You will meet me at a hospital. You will meet me at hospital. Okay. He stands at the door. He stands at the door. Okay. Please pay attention. Next one is what on. ये चैप्टर को फिनिश कर देता हूँ मैं फटाफट. Have a look here. फटाफट मतलब यानी कंसेप्ट आप लोग को ऑलमोस्ट क्लियर है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये. Alright, on. Now when do we use on? We are using on for surface. Surface के लिए हम लोग यूज करते हैं on को. Alright. We are going to use their on for surface. For I example, have देखो यहाँ. question. Yes, please ask. She works on Monday. तो फिर Monday थोड़ी surface है. हाँ बताता हूँ ना, मैंने अभी क्या कहा कि एक एक ऑन का 10-10 यूसेज है. अभी चैप्टर हमारा खत्म हुआ नहीं, पिक्चर तो अभी चालू ही हुई मैम. अभी बहुत सारी चीजें आगे बाकी है. ये देखो, ये था ऑन का पहला चैप्टर बराबर, इन, एड एंड ऑन. नेक्स्ट चैप्टर इन, ऑन एंड एड, एक्टिविटी वाला चैप्टर है ये. एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, टू, इन एंड एड. समझे? मतलब इन्हें एक एक इन और एड के 10-10 यूसेजेस है. तो ऑन हम लोग एक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैं इन यूज करता हूँ एक्टिविटी के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन टेंशन, मैं टेंशन में हूँ. सो इन किसके लिए यूज करते हैं? व्हेन समथिंग इज बिग, व्हेन समथिंग इज इनसाइड. पर यहाँ टेंशन के लिए क्या, टेंशन क्या है? ना तो इनसाइड है ना बिग है. ये क्या है? एक्टिविटी है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज मीट मी ऑन मंडे. ऑन मंडे, मंडे ना कोई प्लेस है ना कोई चीज है ना सरफेस है, पर ऑन यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी है. सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं मंडे, हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं. मंडे कोई नाम है क्या, जगह है क्या कोई मंडे? नहीं है. सो वो एक्टिविटी, वो आगे आने वाली चीज है. डोंट वरी, ये सब आगे चलने वाला है अभी. सो ऑन, तो ये बेसिक यूजेज हम लोग देख रहे हैं अभी ऑन का. सो वी आर यूजिंग ऑन फॉर सरफेस. ओके गाइस, फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि ये यहाँ पर टेबल है, ये टेबल का सरफेस दिख रहा है आप लोगों को. इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है एक बॉक्स है. इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ एक बॉक्स है, दिख रहा है आप लोगों को. सो द बॉक्स इज ऑन द टेबल. द बॉक्स इज ऑन द टेबल. नाउ फॉर एग्जांपल, ऑन अ शेल्फ, शेल्फ पर, ऑन अ प्लेट, ऑन अ बालकनी, ऑन द फ्लोर.
नाउ अब बालकनी के लिए हम लोग हमारे यहाँ पे क्या यूज करते हैं लोग, अरे मैं बालकनी में खड़ा हुआ हूँ, तो मैं In. बालकनी में खड़ा हुआ हूँ तो लोग बोलते हैं आई एम इन द बालकनी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. व्हाई? बालकनी के लिए ऑन लगना चाहिए. क्यों? क्यों? बिकॉज बालकनी कहाँ, बेसमेंट में रहती है, बराबर ना? नो. नहीं सर. बालकनी कहाँ होती है गाइस? बालकनी कहाँ होती है? मिनिमम फर्स्ट फ्लोर पे रहेगी, कम से कम फर्स्ट फ्लोर पे रहेगी. यस नो? यस सर. तो Yes, sir. जब कोई चीज ग्राउंड से ऊपर है, ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर मतलब यानी फर्स्ट फ्लोर कहाँ रहता है? बेसमेंट में, बराबर ना? यस. No, sir. हाँ, नो सर. नो No, सर. sir. बेसमेंट ऊपर रहता है. मैं आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज करते रहूंगा क्योंकि मुझे देखना है स्टूडेंट्स कितने सो रहे हैं, कितने जाग रहे हैं. तो प्लीज मुझे आंसर देते रहना है यहाँ पर. और जो लोग आंसर नहीं दे रहे मतलब वो बेचारे ऑलरेडी भिखारी लोग हैं. प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, मुझे आंसर चाहिए. सी, दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन क्लास, एंड आई वांट यू पीपल टू हैव इंटरेक्शन विथ मी, टू वे इंटरेक्शन. मुझे टू वे इंटरेक्शन चाहिए यहाँ पर. दैट्स इट. सो इफ यू सी दैट, बालकनी जो होती है वो कम से कम ऊपर होती है. तो ऑलरेडी जब कोई चीज ऊपर रहेगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग? ऑन. On. ऑन. यस नो? सिंपल. सो ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर सरफेस है. ऑन द बालकनी, बालकनी के ऊपर. ऑन द प्लेट, प्लेट के ऊपर. ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर. नेक्स्ट वन, ऑन द वॉल, जैसे कि यहाँ पर है. दिस इज व्हाट ऑन द वॉल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल. ऑन द डोर, कोई चीज है यहाँ पे डोर के ऊपर लगी हुई है, द पिक्चर इज ऑन द डोर. ऑन द सीलिंग, सीलिंग के ऊपर है, द फैन इज ऑन द सीलिंग. समझा? सो ऑन वी आर यूजिंग व्हेन समथिंग इज on surface. For example, there are some books on the shelf and some pictures on the wall. There are some books on the shelf, Also some pictures confusing. on the wall. Miss Asma, pay attention. There are a lot of apples on those trees. सब एट और ऑल पे बहुत कंफ्यूज हो रहा है. नहीं, बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा वो. एट हम लोग एग्जैक्ट प्लेस के लिए लगाते हैं, और ऑन हम लोग क्या लगाते हैं? व्हेन समथिंग इज ऑन सरफेस, जब कोई चीज सरफेस पे रहेगी. फॉर एग्जाम्पल एट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? कोई एग्जैक्ट प्लेस. अब फॉर एग्जाम्पल एट द वॉल बोलेंगे कि जनरली, क्योंकि वॉल हमारी बहुत बड़ी है, तो वॉल पे कौन से एग्जैक्टली पोजीशन पर? अब फॉर एग्जाम्पल चाइना वॉल छोटी है क्या? बहुत बड़ी है, तो वहां पर एट Yes, लगाएंगे sir. क्या? एट लगाएंगे वहां पर? No. बिल्कुल नहीं. एट कहाँ पे लगाएंगे हम लोग? जब कोई एग्जैक्ट पोजीशन रहेगा वहां पर हम लोग लगाते हैं एट, उसके अलावा एट नहीं लगाते हम लोग. यस नो? सेम केस एज यू कैन सी हियर, देयर आर लॉट ऑफ एप्पल्स ऑन दोज ट्रीज. उस ट्री के ऊपर बहुत सारे एप्पल्स हैं. सो ऑन दोज ट्रीज, उन ट्रीज के ऊपर बहुत सारे एप्पल्स है. ऑन वी आर गोइंग टू यूज देयर फॉर ऑन द ट्रीज. नेक्स्ट वन, डोंट सिट ऑन द ग्रास, इट्स वेट. घास पर मत बैठिए. एट द ग्रास बोल सकते हैं क्या मिस आसमा? यस, एट द ग्रास बोल सकते हैं मिस आसमा? नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रास के कोई एग्जैक्ट प्लेस है क्या? एग्जैक्ट No, जगह है sir. कि ग्रास? अब गार्डन में No. ग्रास कहीं पर नो भी हो सर. सकती है, काफी कहीं जगह है पर सर. भी हो सकती है. सो ऑन द ग्रास मतलब यानी ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर. सो डोंट सिट ऑन द ग्रास. नेक्स्ट वन, देयर इज अ स्टैम्प ऑन द एनवेलप. अभी जो एनवेलप है तो इसके ऊपर यहाँ पर स्टैम्प है. एट द एनवेलप बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे. No. क्यों भाई? क्योंकि एनवेलप के ऊपर कोई एग्जैक्ट पोजीशन बोला है क्या? हाँ. अब मैं एक और चीज यूज कर सकता हूँ. कॉर्नर के लिए क्या बोलूंगा मैम मैं यहाँ पर? At the corner. At the करेक्ट. corner. यहाँ पे ऐड क्यों लगाया? At, कॉर्नर के लिए, कॉर्नर के लिए ऐड क्यों लगाया? क्योंकि वो स्पेसिफिक जगह है. एग्जैक्ट करेक्ट, पोजीशन. क्योंकि कॉर्नर ये वाला है, बराबर ना? नो सर. हाँ बोलो. No. नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, कॉर्नर ये वाला है, सिर्फ यही वाला है कॉर्नर. करेक्ट. कॉर्नर सिर्फ इसको बोलेंगे, ये स्पेसिफिक जगह है. देखो कॉर्नर इसका एनवेलप का, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है. समझा? और ये मिडल है Yes, इसका. sir. सो कहीं पे भी डाल के उसको कॉर्नर बोलना नहीं, कॉर्नर बराबर कोने में रहेगा. सो एट द कॉर्नर एग्जैक्ट प्लेस. प्लीज आसमा, समझ में आया? सो यस सर. देयर इज अ स्टैम्प ऑन द एनवेलप. ऑन द एनवेलप भी बोल सकते हैं, एनवेलप के ऊपर मैंने स्टैम्प लिखा है. नाउ स्टैम्प चिपका है. नेक्स्ट वन, प्लीज राइट योर नेम ऑन द एनवेलप. बोल, सुना रहेगा आप लोगों ने. प्लीज राइट द Yes, एड्रेस sir. ऑन द एनवेलप. तो एनवेलप पे कहीं पर भी लिख सकते हैं आप लोग. सो वी कैन से ऑन, literally. So please write the address on the envelope. Please write the name on the envelope. Next one. Next, on a horse, on a bike, on a motorbike. We are going to use it on. Who is that man on the motorbike? On a horse, on a motorbike. Can you please give me some sentences with on? On के साथ में sentence दे सकते हैं आप लोग प्लीज मुझे?
Please give me sentences with on. He dust He on the jump fan. on he jump on the bed. He is jumping on the bed. Sir, Yes, can we say on There the are a left? lot of dust in the on the left, fan. On the fan. on Book the is fan. on the Yes, ma'am. table. Can we say on the left? He's on the bed. Obviously, On the बोल right side. सकते हैं. Correct. On the left side, on the right side. Okay. For example, the shops are on the left side and the Mm-hmm. hospitals are on the right side. Yes. सरफेस पे है ना दोनों भी चीजें. ग्राउंड सरफेस पे, जमीन के सरफेस पे बोल सकते हैं हम लोग वहां पर. No, means exact position. The man sat on a chair. Yes, yes. हम लोग अगर एग्जैक्ट अगर पोजीशन अगर रहेगी, फॉर एग्जांपल, प्लीज ऑल ऑफ यू लिसन टू मी केयरफुली. ऑन द अर्थ हम लोग बोलते हैं ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड राइट साइड एक साइड हो गई वो, करेक्ट. उसके लिए हम लोग ऑन लगा सकते हैं. बट अभी कोई चीज अगर एग्जैक्ट पोजीशन पे रहेगी तो हम लोग वहां पर एट लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एट द कॉर्नर. फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आप लोगों को एड्रेस बताना है, कैसे बताएंगे एड्रेस? ध्यान दीजिए आप लोग. आप लोग को पूना कॉलेज से यूनानी हॉस्पिटल जाना है, आप लोग कैसे बताएंगे? गो स्ट्रेट अहेड, गो अलोंग द पाथ. प्लीज ध्यान दीजिए सभी लोग. गो स्ट्रेट अहेड, go along the path and keep on going. Go past Anglo Boys High School. Correct? Go past Anglo Boys High School. At the end of the street, at the end of the street, Unani Hospital is on the left. Unani Hospital is on the left. तो on the left क्या? On the left side. पर बराबर कॉर्नर पे नहीं है वो. कॉर्नर पे कुछ और ही बिल्डिंग है उसके. Mm-hmm. स्ट्रीट के कॉर्नर पे कुछ और ही बिल्डिंग है. हाँ, अगर मुझे बोलना है कॉर्नर पे कुछ है तो मैं बोल सकता हूँ द दैट सॉरी जेके कॉलेज इज एट द कॉर्नर. सपोज ऐसे खाली बोल रहा हूँ मैं. सो जेके कॉलेज इज एट द कॉर्नर. कॉर्नर पर है तो कॉर्नर क्या हो गया? स्पेसिफिक प्लेस हो गई ना वो, तो वहां पर एट यूज करूंगा मैं. The coconut seller is on the right side at the करेक्ट, corner. करेक्ट. एट द कॉर्नर ऑन द राइट साइड, ये करेक्ट है, बिल्कुल सही. एट द कॉर्नर ऑन द राइट साइड. ओके, लेट्स गो. प्लीज मेक सेंटेंसेस विद ऑन. जल्दी जल्दी प्लीज. Sentence with on. On the chair. My On the lap. chair, Keep these books on the table. on the table. Next, Phone is on the desk. on the desk. Next, Pillow And on the slept bed. on the bed. on the bed, The man sat on a chair. on a chair. Sign on the paper. Correct. Sign on the paper. Now, for example, Please, I have a please. I have a logo. I have some kind of symbols on my t-shirt. T-shirt. So on my t-shirt मतलब मेरी t-shirt पर simple. At my t-shirt नहीं बोलेंगे क्योंकि t-shirt के कौन से हिस्से पे मालूम है क्या? नहीं. On the t-shirt. चलो. Something is on the On the television. fan. Correct. On the fan. On the The- television. The book is on the table. On the table. He's crawling on the floor. He's crawling on the floor. Stand on the chair. Stand on the chair. I will speak on the stage. Good. The plates are on the dining table. Correct. On the dining table. I live on the bottom floor. I live on the ground floor. Ground floor. The towel is on the hanger. On the hanger. Very good. Yes. The pen is on the book. The pen is on the book. Miss Jyoti, speak up. Miss Asma, Don't speak. let more. Good. Correct. I'm studying on the Speak table. up. I am studying on the table. The pillows are on the bed. On the bed. He writes on a board. He writes on a board. On. Jay, speak up, my dear. So, grasshopper hopping on the grass. Can we say like that? Yes, yes, absolutely. On the grass. Hmm. Shoaib, speak up. Mehak, speak up. I am on the terrace. I'm on the terrace. Very good. I put book on the table. Correct. I put the book on the table. I keep the book on the table. I'm on the There phone. are some cats on the shelf. Correct. On the shelf. Hmm. I just kept it book on a shelf. I kept the book on the shelf. The photo is in the shelf.
Good. On the pavement, on the crosswalk, on the Hmm. pedestrian crossing, on the pelican crossing, I am on the bike. on the floor, She called him on the phone. on the phone. ये आइडिया के लिए यूज हो रहा है. On the phone, फोन पे बुलाया. I am on the bike. I'm on the bike. I'm on the way. Repeat once again, Miss Jyoti. I am sitting on the sofa. I'm sitting on the sofa Don't use I am on the mobile way. on motorbike. on motorbike. I'm on the way. It is also an idea. So is it an action? Don't use mobile on a bike. On bike, actually this is what for the real entity. ये मैं कल explain करने वाला हूँ. जो मैंने आज बोला है ना, मैं कल Okay. बताने वाला हूँ. कल हम आप लोगों को आप लोगों का क्वेश्चन है आज का ये. Why are we using here on for plane, on for ship, on for bus, on for truck, on for train, and why are we using here in for bed? ये मुझे कल इसका जवाब चाहिए. Okay? बेड के लिए इन कैसे यूज करते हैं? ऐसा मैंने यूज नहीं किया, फॉरनर लोग खुद यूज करते. तो क्यों यूज करते हैं? Is it like अभी यहाँ means पे सहाना मैडम, ओके, यहाँ पर अभी सहाना मैडम ने एक सेंटेंस बनाया है. द पिलोज आर ऑन द बेड. एम आई राइट मैडम? Yes, sir. वो सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. मैंने गलत भी नहीं बोला वो सेंटेंस को. क्यों? वजह है, वजह तुम हो. मैं आपको कल बताने वाला हूँ वो क्यों है ऐसा. एनीवन एल्स? sir, I just want to ask one thing. Uh, hello. यस यस, स्पीक अप. See, is it means something we boarded? That time we use this on or what? Correct, exactly. But what about this? If you are boarded on, means in a boat as well, but we are using their in. Yeah. Boarding is there here in boat as well, but we are using their in, not on. Okay. All right, guys. Any doubts to anyone? No, sir. Any questions sir. to anyone? I want you people to go through this book. Unit number 106. You're going to practice at home. अब समझ में आ रहा है? अब हमारा जो पोर्शन है जिप जैप जूम जाने वाला है वो. So I want you people to practice at home. It's my another class time. We'll see you tomorrow on time as well. Okay? Second batch वाले please वापस से join करना है आप लोगों को. All right? So please all of you practice at home and see. आज मेरा 5वां birthday. Today is 5th of August. Please all of you pay the fee. इससे पहले कि मैं आप लोगों को क्लास के बाहर करूँ. So please all of you pay the fee. All right? We'll see you tomorrow. Bye bye. Cheerio. Thank you. Thank you, sir. Cheerio.